Hi everybody, this is Hira Khan and today I'm going to take you through my nighttime skincare routine. So the first step is that I'm going to remove my eye makeup and I'm going to use this makeup remover. It's very important कि आपकी आंखों से properly makeup जो है वो remove हो जाए. This is how it looks. और मुझे तो आदत है कि मुझे प्रॉपरली अपना मेकअप अच्छी तरह रिमूव करना होता है क्योंकि 10-12 घंटे के शूट के बाद आपसे एक भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती अपने मुंह पे. I think we are done here. So the second step is that I'm going to double cleanse my face. You can do it at night because जब आपके मुंह पे बहुत सारी मेकअप की layers होती हैं, there's dust, there's pollution. तो I'm going to use this butter but better cleansing balm. ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ because I used to use a lot of micellar water on my face with these cotton pads और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी skin ठीक होने के बजाय और ख़राब होती जा रही है. So इसका फ़ायदा मुझे ये है कि मैं बस इसे लगाती हूँ and I use it with a little water so it's not like really harsh on my skin. And you just have to, I'm going to use a little more water ताकि सब कुछ आराम से उतर जाए. इसकी अच्छी बात यह है कि this is very like it's very soft on your skin. जब भी मैं micellar water से अपना मेकअप रिमूव कर रही होती थी तो मेरी आंखें बहुत जल रही होती थी और मैं कहती थी कि this is a problem. तो वैसे भी I am really into organic things so it feels very organic on my face जब भी मैं इसको उतार रही होती हूँ. As you can see कि सारा कुछ उतर के कुछ बन गया है फेस पे. But yeah, so I'm just going to अपना मुंह धोने के बाद अब मैं अपने मुंह को एक्सफोलिएट करूँगी which is very important. So इसके लिए I'm using this Acufix salicylic acid. होता ऐसे ये है कि जब आप इसको रात को अपनी स्किन को प्रॉपर्ली एक्सफोलिएट करके सोते हैं तो सुबह तक आपकी स्किन को रिकवर करने का टाइम मिल जाता है और उसके साथ साथ आपकी जो स्किन की लेयर के अंदर कहीं मेकअप चला जाता है या वो नहीं निकल पाता. तो दिस रियली है. जो लोग मुझे ये कहते हैं कि हम अपना मेकअप लगा के रात को सो जाते हैं, इससे बड़ा गुनाह आप अपनी ज़िंदगी में अपनी स्किन के साथ नहीं कर सकते. तो इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट जितना मेकअप करने में टाइम लगाते हैं उससे आधा टाइम आप मेकअप उतारने में भी लगाएं. Thank you for coming to my TED Talk. This is done and now I'm going to just rinse it. जब काम करना शुरू किया था तो मेकअप करने का मज़ा आता था और अब जब रोज़ मेकअप करती हूँ तो मेकअप उतारना is my favorite part of the day. Now I'm going to wash my face with this resurfing face wash. इसकी सबसे अच्छी बात ये it has haldi and it has honey. So I am going to use this. And whenever I wash my face, I actually feel it कि ये करके तो मेरी स्किन ज़रा एकदम से सांस ले रही है, it's breathing. अब फिर से मुंह धोते हैं. So now I'm going to put this vitamin C cream on my face. This is something that I do in the mornings as well with SPF. अच्छा, so whenever I put this, there's a little itching on my face. ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हो रहा है, मतलब थोड़ा, but it is supposed to happen because it is vitamin C, right? So you don't have to get scared. इसकी वजह से अगर आप घर में भी हैं you have to put SPF on your face because सूरज की जो किरणें no. So whenever you're out in the sun you get these really harmful radiations on your face. Never step out without your sunscreen because the suraj will destroy your skin. So no. With that I'm going to use this hydration cream. So I am going to put this on my skin. So as you can see कि already it's going in really well. आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लेने की भी ज़रूरत नहीं है. I feel so fresh already. So this is done. Moving on, what I do next is that I put this lip balm. Done. So lastly, I like to smell nice even if I'm going to bed. Very important. You must smell nice all the time. So I use this body lotion fragrance and it is So I like to put it here, everywhere. Alright guys, it's time for bed.
Good night. Hope you guys enjoyed the video. Don't forget to like, share and subscribe.